Hello and welcome everybody students. Today we will discuss about the respiratory disorder. Okay, the disease or disorder related to respiration. So today we will discuss about respiratory disorder. Okay, what do you mean by disorder, students? Disorder means the unhealthy condition of our respiratory system or unwell-being of our respiratory system, because we are discussing about respiratory disorder. That means there arises some problems, some difficulty and some unwellness in our respiratory system. So that condition will be told as respiratory disorder. Clear? So in respiratory disorder we can divide it, or we can divide the respiratory disorder into three subcategories. For example, one is your infective but infectious respiratory respiratory पूरा लिखो नहीं disorder. Are you getting me? Clear? So in second category we can write carcinogenic disorder, or simply तुमे लिखि पारिबो ट्यूमर or cancer. Co-cancer, which cancer? Since it is related to respiratory disorder, so obviously it will be the lungs cancer. This is a second type of disorder related to respiration. And the most important category that comes under third category is known as obstructive respiratory RESP मतलब respiratory शॉर्ट है. क्लियर? disorder समझ में आ गया बेटा? So we can divide the respiratory disorder into three subcategories. Clear? By three types, categories or types. है ना? कितने प्रकार अच्छी ना? Three types. One is infectious respiratory disorder. Second is tumor or carcinogenic, that means cancer, lungs cancer. And the third one is obstructive respiratory disorder. So in your syllabus there is no talking about the number one and number two type of respiratory disorder. It means infectious respiratory disorder is not involved in your syllabus, and also lungs cancer is not also included in your syllabus. So what we will study here? We will study here some mainly three disorders which comes under obstructive respiratory disorder. So we will tell why, sir, if we will study about some obstructive respiratory, what is the necessary to know about these first two? You have to know. Sometimes in entrance exam, in short type answer, some questions comes which will be present under these two categories. So in that time you cannot blame yourself and you cannot blame your teacher that our teacher could not tell us or will not tell us in that time. So I am telling you these are two categories are also there. So in obstructive respiratory disorder we mainly study about asthma, and in second we will also study about emphysema and some
occupational respiratory disorder. Occupational respiratory disorder. Clear? Occupational respiratory disorder. There is not a specific occupational respiratory disorder. There are many disorders which are related to our occupation. Clear? So asthma, emphysema, occupational, these three are included in our syllabus. We will discuss about these three. Also, if time will be available, we also describe or discuss about allergy. Okay, allergy. These are comes under obstructive respiratory disorder. Obstructive respiratory disorder means these type of disorders related to the obstruction, the hindrance in our respiratory system. It may be in our bronchi, it may be in our alveolus, it may be it involves in our respiratory system, any place in our respiratory system. There must be some obstruction, some hindrance, biological hindrance or environmental hindrance, or some viral hindrance or bacterial hindrance, which results these three type of disorder. You can say this. So let's start one by one. First asthma, then emphysema, then occupational disorder. If you will know about infectious respiratory disorder, I am telling you two to three disorders which comes under infectious respiratory disorders. One is your TB. Clear? So another two also are there: TB, pertussis, pneumonia, diphtheria. Clear? Pneumonia, diphtheria. You can remember these three diseases, though these three are not present in our syllabus. You may, if you are interested, you may remember these three types of name of three diseases which comes under infectious disorder. And tumor or cancer, it is already discussed. We already know, mentioned about lungs cancer. There is no specific other cancers. Clear? It is only lungs cancer, also already mentioned. So let's start from asthma, which is in your syllabus. Clear? What do you mean by asthma? What is the cause of asthma? What happens when asthma occurs or attacks you? Clear? So asthma. Clear? First try to understand what happens in asthma, or what is the disease, or what is the reason behind asthma. What happens actually? We know in our lungs there is the last part which is called alveolus. Before alveoli there are some branches. Yes or no? ये रहा तुम्हारा क्या, ट्रैकिया क्या कर रहा है, क्या गया है, वो ब्रांचिंग हो गया है. It divides into two branches, primary bronchi. Clear? Again, the primary bronchi divides to secondary bronchi. Yes or no? You have already know about this, है ना? फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एंड फाइनली डक्ट, respiratory duct, then alveoli. So what happens in asthma? These bronchi, clear? In asthma there are some obstruction or some you may say it's spasm. What? Spasm. In these places there occurs some spasm. Okay.
Bronchial spasm, it also known as bronchial spasm. We know about when we inhale oxygen or exhale carbon dioxide, that means when respiratory gas get exchanged between our body and environment, the respiratory gases will have to pass through this bronchi. Yes or no? Trachea, bronchi. जहाँ भी आमर गैस छुआ आम बॉडी आउ एनवायरनमेंट भितर एक्सचेंज होबार अच्छी से क्या भितर देखिए हम ट्राकिया आमर कौन रहा ब्रोंकाई ये ब्रोंकाई थ्रू रे हम कि नहीं ब्रोंकाई देके आसो ऑक्सीजन भितर को आसो ऑक्सीजन इन कर या बाटे जीव ना ना जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से बाटे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कि नहीं सो दिस पैसेज दिस एक्ट एज ए पैसेज फॉर आवर रेस्पिरेटरी गैसेस ये जो जगह रहा ये जो जगह ये कौन रूपे काम करुच्ची ना आम जो रेस्पिरेटरी गैसेस रहा तार जीवा आसबार रास्ता रूप में एक्ट करुच्ची बा काम करुच्ची जदि एथिरे किसी प्रॉब्लम हुए जदि यही रास्ता रे ये पैसेज रे इफ देयर आर सम प्रॉब्लम सम हिंड्रेंस सम ऑब्स्ट्रक्शन से तो कही क्या भितर पढ़ुं आम ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज भितर पढ़ुं ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज जदि ये रास्ता रे किसी ऑब्स्ट्रक्शन है यही रास्ता रे आमर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जीवा आसबार किसी व्याघात घटिला ताहाले आमे कौ रोग शिकार हवा छुआ मेनली आस्थमा रोग बा तुम्हें एमती भी कही पार इफ वी आर द विक्टिम ऑफ आस्थमा और इफ वी आर अटैक्ड बाय आस्थमा that indicates our bronchial passage the air passage in our bronchi or in our respiratory system which indicates to bronchial passage is get affected is obstructed by certain elements whatever it may be clear तो किसी गोटे प्रॉब्लम है आमर ब्रोंकाई ठारे बा प्राइमरी ब्रोंकाई ठारे बा ब्रोंकस भितर जो पैसेज रहा से आमर आस्थमा होची हला तो प्रॉब्लम स्पाज्म एक्चुअली जोटा को आम कहते ब्रोंकियल स्पाज्मा आस्थमा रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्मा व्हाट इज ब्रोंकियल स्पाज्मा द स्पाज्मा मीन्स स्पाज्म मीन्स द involuntary muscle contraction है स्पाजम माने हो व्हाट डू यू मीन बाय स्पाजम सिंपली मीन्स involuntary muscle contraction so if hence we are discussing about bronchial spasma so it is simply means the involuntary muscle contraction of bronchi ब्रोंकाई रे जो रहिला छुआ आमर मसल से मसल जदि कंट्राक्ट कला आमर इच्छा विरुद्ध रे इनवॉल्यूंटरी मीन्स कौन वॉलंटरी नुहे जोटा कि वॉलंटरी होची इच्छा अनुसार इनवॉल्यूंटरी है इच्छा विरुद्ध रे जदि से जगार मसल कंट्राक्ट कला कौ जगार ना ब्रोंकाई रे जो मसल अच्छी जो मेम्ब्रेन अच्छी से जदि कंट्राक्ट कला ताहाले से कंडीशन को आम कहवा ब्रोंकियल स्पाज्म इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्राक्शन क्लियर तो यही जगह जो मसल अच्छी मेम्ब्रेन अच्छी सी कौन हो कंट्राक्ट कर कंट्राक्ट माने छा संकोचित हो जदि यही रास्ताटा ये माने ब्रोंकियल स्पाज्मा जुगु ये रास्ता कौन है ना कंट्राक्ट हवा आरंभ कला कंट्राक्ट माने सरू हो हाँ नहीं एतिकी मोटा थिला तो ये रास्ताटा सी कौन हो आहरी पतला होतिकी है थिला केते एते थिला ता उत्सार देख पैसेज ए रास्ता बर्तमान केते होगा ये जस्ट एतिकी उत्सार रहीगला केते थिला देखुछ ना नहीं एटा कौन पाई हला ना ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्मा हाँ ना नहीं तो ब्रोंकियल स्पाज्मा जो मसल कंट्राक्ट कला तो बर्तमान आम प्रॉब्लम छा कौन हम एठी जो रेट रे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो पासेज होउथला ए रास्ता रे ये जतले तार वाइट कमी जीव छुआ तार जो वाइट रहीतला उसार जतले कमी जीव तो ये वर्तमान इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज हेई परिबो नाही ए रास्ता देकी जो रेस्पिरेटरी गैसेस पास करतला सेटा ठीक से हेई परिबो नाही सो वी विल फेस द ब्रीदिंग प्रॉब्लम वी हैव टू फेस द सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक रमी नोज टायर्डनेस है शॉर्ट ब्रीदिंग
दिज विल बी द सिम्पटम्स ऑफ अस्थमा धई सही होती देखना एमती होती सो these are all about asthma in asthma mainly what happen now the white of bronchial passage gets decrease or get narrowing नेरोड कही पार अणओसारिया हो जाए से कौन हुए ना वी फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम है आमर यार रिजल्ट कौन हम एमती हवा द्वारा ना सिम्पटम सब कौन देखेब आमको छुआ ब्रीदिंग निश्वास नबार प्रॉब्लम हम आ निश्वास भी जो नवा धई सही रकमर है भाया नब मैंने सर्ट ब्रीदिंग एमती लंबा ब्रीदिंग नुहे जोटा आम नॉर्मल ब्रीदिंग लंबा नुहे सर्ट ब्रीदनेस एमती हम आउ बेले बेले कौन हुए जो मैंने आस्थमा पेसेंट छुआ थे से माने गोटे गोटे धरी थे सीसी रकम देखु से इनहेलर धरती सब बेले केत ऑक्सीजन अभाव हो पाए इजी ब्रीदिंगनेस ब्रीदिंग से माने गोटे इनहेलर भी यूज करती आउ से पाखे लक्षण कौन देखा जाए ना से बहुत समय कौन एमती कंडीशन आसो से मूर्छित हो जीवन भी इट मे कॉस्ट देयर लाइफ आल्सो समटाइम्स ओके दे गॉट फैंट व्हेन दे क्लाइम्स द स्टेयर्स समझ में आ रहा है ना जिते से पाउछ छुआ चढ़ुवे जदि कहार आस्थमा थी से मे भी संभावना अच्छी से मूर्छित हो जाती पाउछ चढ़ला बेले इवन इन समतल रास्ता जो आम रहा प्लेन ग्राउंड रे भी चलला बेले से धई से बेले बेले मूर्छित भी होती तो से रेस्पिरेटरी एबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाता है इनहेल से भर ऑक्सीजन ठीक से जाए ना तो नेरो हो जाए ना अणवश रास्ताटा कमी जाती उत्साह था से कमी जाए ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्म नेरो हो जाए नेरो हो गले ऑक्सीजन जीवासवा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज ठीक से हेनी जीवासवा ठीक से हो पारनी आम बॉडी हो एनवायरमेंट भितर तो तार रिजल्ट कौन हम ना आस्थमा आम कथा देखा आस्थमा हेल्ले कौन कौन लक्षण हम तुमको ये सब विषय भी कहली हुए कहीं ना जो एक्सेस ठंडा हो जाए कोल्ड है बेले बेले तुम जो इन्फ्लुएंजा भाइरस अधिका अटैक हेल्ले सेटा भी आमर आस्थमा हो जाए एक्सेस कोल्ड जदि तुमको हो एक्सेस ठंडा हो सब बेले ठंडा हो तुमको आटा हो पारे आउ कौन जदि कौन सी तुम जो एयर एलिमेंट रहा जमीक डस्ट रहा छुआ स्मोक रहा छुआ है स्मोक पोलेन परागरेणु छुआ बेले जन जन फूल को शुंघीदे से छिंक होती देखो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दैट सिम्पटम्स है डस्ट स्मोक पोलेन है आउ फैक्ट्री रे जो बाहर गैसेस है फैक्ट्री गैसेस कोल माइन हो तुम आजबेस्टस हो से फैक्ट्री मानक सब अवश्य से आम पढ़ा जोटा आम ऑक्युपेशनल डिसऑर्डर भितर तो यही सब कारण जो सब फैक्टर जो आमको आस्थमा हबार बहुत संभावना अच्छी सो दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर ओके इन सेकेंड कैटेगरी what we will discuss about na emphysema not sema it means emphysema clear emphysema EMPHYSEMA एम्फीसीमार छुआ कौन हुए एठी जमी छुआ ब्रोंकियल स्पाज्म होता ना ये आल्वेओलाई स्पाज्म हम आल्वेओली कंट्राक्ट कर आल्वेओलर सरफेस एरिया कौन हो कम हो जाए डिजीज एक्चुअली तो मेकानिजमटा कौन कौन हुए ना आम जानी आमर लंग्स जो लंग्स पढ़ुते मन ब्रोंकस ब्रोंकायल सब पढ़ुते ब्रांच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पूर्व कि समय पूर्व कहती तो सेटार लास्ट को कौन थिला आल्वेओलर डक्ट डक्ट पर कौन थिला आल्वेओले जोड़ा एयर बबलटा
तो से अल्वेओली विषय आम ये जाना अल्वेओली रे ही यहाँ प्रोब्लेमटा हुए एम्फिसीमा तो ये हुए कौन ना छुआ आम जानी अल्वेओलीटा कौन आमर ये कौन हुए ना ऑक्सीजन आ कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज ये ही हुए हाँ ना नहीं कारण या चारिपटे कौन जाइए छुआ ब्लड वेसल जाइए यस और नो ब्लड वेसल रन्स अराउंड alveoli clear this is alveoli बा कोई परिबो ए पर्टिकुलर एक्चुअल ए जिंस रहउछ alveolar membrane है ना नहीं as it is present in outer side we can call it alveolar membrane है ना so oxygen and carbon dioxide get exchanged in this surface so it is termed as respiratory surface बा जो सरफेस थ्रू रे जो मेम्ब्रेन थ्रू रे आमर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुए से मेम्ब्रेन को से सरफेस को आम कौन कहते छुआ ना रेस्पिरेटरी सरफेस सो एटा बर्तमान जाना था ना ए विषय में तुमको कही रेस्पिरेटरी सरफेस रो क्वालिटी कौन होइतबा दरकार व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू इट मस्ट बी मॉइस्ट इट मस्ट बी हाईली vascular in nature yes or no the surface area should be large so those are the characteristics so respiratory surface means the surface area through which oxygen and carbon dioxide get exchanged what happens in emphysema or what factor is responsible for emphysema when some people smokes clear जब कोई सिगरेट पीता है बेटा तो धुआं निकलता है ना धुआं निकलेगा इस धुएं क्या करेगा इस धुएं आके इस सरफेस के मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ डिपोजिट हो जाएगा है ये जो धुआं उड़िया कौच बुझे ना नहीं छुआ ये जो धुआंटा तुम सिगरेट थ्रू रे पिउथब से धुआंटा आसिक कौन हम ना सरफेस रे सब लगिजे छुआ देख या पूर्वर कौन थिला पूर्वर सरफेस पूरा क्लीयर थिला जिते तुम सिगरेट न टाणुला किए जन स्मोकर जो सिगरेट न टाणुला से सरफेस क्लीयर थिला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा शय कौन होते एक्सचेंज हो पारुथिले देयर इज नो इश्यू एट ऑल इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बट आफ्टर 3 to 4 months ऑफ स्मोकिंग 3 to 4 मास स्मोकिंग कला परे कौन होची ना तुम जो सरफेस थिला एरिया थिला जेतिके एरिया रे सब एक्सचेंज होतला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो से एरिया वर्तमान एटा सब एक्सचेंज होतला ना नहीं एटा सब एक्सचेंज होतले एरिया रे तो ए एरिया रे वर्तमान सरफेस एरिया कौन है कमी जाइए यही एरिया थ्रू रे वर्तमान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो पारना कारण कौन छुआ ना कला कला धुआं यही सब एरिया रे डिपोजिट होती किसी एरिया एवं भी खाली अच्छी जदि तुम कंटिन्यू कर सी भी बंद हो माने जदि तुम कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करवा चालू रख ये भी बंद हो आउ टोटाली जापर ना डेथ हो लास्ट को तो यही एरिया रे कौन हो तुम ना जो धुआं आम स्मोकिंग करा जा छुआ डिपोजिट हो सो दैट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ए जगह कौन हो पारना ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन हो पारना ना एक्सचेंज हो पारना ए जगह हो कहीं मिछ कह तुमको ए जगह होगा किंतु बेसी दिन हेनी जदि तुम कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कल सी भी आस्ते आस्ते कमिज मो कहर माने हूँ एम्फिसीमा कौन पाई ना कौन पाई हुए ड्यू टू बा एम्फिसीमा कौन हुए ना ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया लगा ड्यू टू डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्लियर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इन
कौटी की सरफेस एरिया अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इन आल्वेओलाई जो आल्वेओलाई रे रहिले सरफेस एरिया तो से सरफेस एरिया रे कौन हुए सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए है ना कमी जाए तो से कमी गले कौन हम ना एम्फीसीमा से कंडीशन को कहते एम्फीसीमा आ एम्फीसीमा रे कौन हुए कमी तो जाए आम सरफेस एरिया जानिले ता द्वारा कौन हम ना O2 एंड CO2 कैंट एक्सचेंज इजिली है ना नहीं जो आगुरी पूर्वर से इजिली एक्सचेंज हो पारे ट्रांसपोर्ट से मेम्ब्रेन थ्रू रे वर्तमान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैनॉट बी एक्सचेंज सो इजिली हेबे किंतु सेते इजिली हो पारियोनी तुमको तकलीफ हम निश्वास नबार प्रॉब्लम हम तुम सेल बा टिश्यू पाखक जी अमाउंट रे ऑक्सीजन आगुरी पहुँचुला नॉर्मल कंडीशन ले वहाँ एम्फीसीमा है तुम ऑक्सीजन तुम बॉडी की ठीक से सप्लाई हम ना ऑक्सीजन अभाव हम तुम बॉडी रे तो बुझीपार ना नहीं बहुत सारा कंडीशन रेस्पिरेटरी तुमको देखा हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम हम टायर्डनेस हम शोई पार ना ठीक से अल्प बाट समतल जगह भी चलिए तुमको थकीज है ना नहीं तो देयर आर सम सिम्पटम्स ऑल्सो एज आई मेंशन हियर सो इन एम्फीसीमा खाली मन रख एम्फीसीमा कौन हुए ना एम्फीसीमा सरफेस एरिया कमी जाए कहार सरफेस एरिया ना रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया सेटा अच्छी कौटी ना ओब्वियसली सब आल्वेओली मेम्ब्रेन ताको आमे कहते रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते तो से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस टाकू एरिया को आमे कहते सरफेस एरिया जोटा कि ये टोटाल एरियाटा तो से जदि सरफेस एरिया डिक्रीज है तो एतिकी जगह ऑलरेडी आम डिक्रीज होगा एतिकी फांका अच्छी एवं किंतु एतिकी डिक्रीज होगा ना तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट इन alveoli इज result बा इट इंड्यूसेस द कंडीशन एम्फीसीमा को सही कंडीशन को से जन्म दब जदि सरफेस एरिया कमी कम कौन पे ड्यू टू मे बी इट मे बी ड्यू टू स्मोकिंग इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू बैक्टेरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन बेले बेले स्मोकिंग जो मैंने करू भी नथिबे सेमानक पाखरे भी एम्फीसीमा देखा जाए कारण सेमानकर बैक्टेरिया और वायरस मैंने अटैक करती तो बेले बेले कौन सरफेस एरिया को आमर alveoli के तो ये जगह से सब जमा होगी रही तो से एरिया थ्रू रे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाई परिबनी तो इट ऑल्सो मे रिजल्ट एम्फीसीमा सो एम्फीसीमा विषय में आम जानिले छुआ सिम्पटम्स सेम सिम्पटम्स जी रेस्पिरेटरी डिजीज अच्छी सब सेम सिम्पटम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाई परिबनी तामाने आम बॉडी पाखरे ऑक्सीजन ठीक से पहुँचबनी सब सेल मानकर रिक्वायरमेंट ठीक हेनी मेटाबॉलिज्म हेनी तो सेठू पुणी बहुत प्रॉब्लम हम टायर्डनेस हम हाँ कि नहीं सो दीज आर मेनी सिम्पटम्स यू कैन ऑल्सो फाउंड इन योर बुक्स एज मेनी वांट एज यू ओके जिते तुम चाहब से पाइपर किसी असुविधा ना से तो ये गला तुम छुआ एम्फीसीमा खाली मन रख कौन पाई हूँ एम्फीसीमा है ना आ कौन हुए सेठी जो आम रहा जो आम आस्थमा से ब्रोंकियल जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई रहिले से ब्रोंकाई रे जो पैसेज रोची जो जहाँ थ्रू रे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जीवा आसिया करते जो रास्ता देखी से कौन होता डिक्रीज होता ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्म एठी कौन हुए ना जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज है ड्यू टू कवरिंग ऑफ स्मोक इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ले स्मोक जाए कौन कर दिए कवर हो जाए लगी जाए स्मोक गुड़ा है देखी थो रोसई घर सब लगी जाए कला कला धुआं सब लगी था कांथरे सेमती भी आम रेस्पिरेटरी लंग्स रे कौन हुए ना सरफेस उपरे से जाएंगे बाट अवरोध करते आउ गोटे रहा ऑक्युपेशनल डिजॉर्डर दिस इज नथिंग है टू नो अबाउट इट ऑक्युपेशनल डिजॉर्डर ए विषय तुमको छुआ कौन कहबी ऑलरेडी टाइम हो गलानी प्राय तुम छुआ ऑक्युपेशनल डिजॉर्डर ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर से कहूँ द डिजॉर्डर द डिजीज व्हिच एराइजेस इन द इन योर जॉब एरिया इट मीन जदि तुम कौन सी ऑक्युपेशन अच्छ से ऑक्युपेशन तुम किसी गोटे फैक्टर को एक्सपोज हेल ता जो तुमको डिजीज है ताकू कहवा ऑक्युपेशनल डिजॉर्डर द डिजॉर्डर इट मे बी डिफाइन एज द डिजऑर्डर और द लंग कंडीशन गेट वर्सन माने खराब हवा वर्सन इन ना वर्सन ड्यू टू द ऑक्युपेशन of
एन इंडिविजुअल है छुआ बुझीपार कि छुआ द डिजॉर्डर और लंग कंडीशन जदि आमर लंग रो कंडीशन जो फुसफुस रो अवस्था रहा लंग कंडीशन गेट वर्सेन खराब हुए जदि आमर डिजीज हुए बा आम लंग्स विषय में पढ़ुन ना लंग्स रो कंडीशन वर्स हुए खराब हुए ड्यू टू आवर ऑक्युपेशन ड्यू टू द ऑक्युपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल गोटे व्यक्तिर ता वृत्ति पाई से जो वृत्ति करुँची से वृत्ति पाई ता काम पाई जदि ता लंग्स रे कौन सी कंडीशन ले लंग्स अवस्था खराब हुए ताले सही डिजॉर्डर सही कंडीशन को आम कहवा ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर बुझीपार ना ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर ऑक्युपेशनल माने कौन आम वृत्तिगत जदि गोटे मनकर गोटे लोकर ऑक्युपेशन होची आजबेस्ट फैक्ट्री रो काम करवा मोर वृत्ति मो ऑक्युपेशन होची आई वर्क इन ए आजबेस्टस फैक्ट्री और इन ए कोल माइन मन कर गोटे कोयला खनि में काम कर आजबेस्ट फैक्ट्री रे जदि मो वृत्ति मो ऑक्युपेशन मत किसी डिजीज है मो लंग्स किसी प्रॉब्लम है ताले सही प्रॉब्लम टाको सही डिजॉर्डर को कहवा ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो नॉर्मली ये कौ ऑक्युपेशन हुए रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर हुए जदि जड़े छुआ आजबेस्टस फैक्ट्री रे काम करुथो से जदि प्रॉपर्ली मास्क पिंधबनी बा एक्सपोज हम से डस्ट सहित जो आजबेस्टस डस्ट बाहर सेटा जदि से बारंबार एक्सपोज हम से जो काम करती लोक तो से छुआ लंग्स रे प्रॉब्लम हुए दुनिया सिम्पटम देखेब तो सेटा को कहती ऑक्युपेशनल डिजॉर्डर कौ ऑक्युपेशन मेन देखा जाए ना बेसी देखा जाए कोल माइन जो मैंने काम करती छुआ कोयला खनि बुझीपार ना नहीं आजबेस्टस फैक्ट्री रे जो मैंने रोचंती आजबेस्टस और कही पार सिलिका बालुका फैक्ट्री रे है ना नहीं आउ जो मैंने रोड रे जो काम करती रोड रे है ना रोड वर्कर्स जो मैंने रहिले नेशनल हाईवे तैयार कर सब गाड़ी घोड़ा जावास करुवे से तो काम करुवे से स्मोक सहित हाँ इंडस्ट्री एरिया जोटी कि स्मोक रिलीज होता सब बेले धूआं बाहर चिमिनी इटा भाटी भाया जगह तो सेठी जो मैंने काम करते से लंग्स डिजीज सब फुसफुस रे प्रॉब्लम सब देखा से रेस्पिरेशन रे प्रॉब्लम हम ब्रीदिंग रे प्रॉब्लम हो जहाँ ना कि प्रॉब्लम देखा तो सही प्रॉब्लम गुड़ा डिजॉर्डर कहते ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज यार परफेक्ट सेमती किसी ना ठंडा हम मुंड बिंधब यही सब लक्षण देखा छुआ है दीज आर द रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर सो also there are an example which is not in your syllabus that is allergy है ना नहीं तो आज तो टाइम है छुआ एटा भी तुम सिलेबस भितर ना बट नेक्स्ट क्लास रे तुमको जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम विषय पढ़ेबी पल्मोनारी कैपेसिटी भितर जदि टाइम हम तुमको एलर्जी एटा या विषय भी ये कहीदेवी जेहेतु एटा गोटे रोग नुहे मन रखिथ एलर्जीटा गोटे रोग नुहे गोटे सिम्पटमटा है तो ये विषय भी तुमको गोटे रिएक्शनटा है ना बॉडी रे गोटे रिएक्शनटा तो या विषय में नेक्स्ट क्लास रे जदि हम किसी डिस्कस करवा किंतु एटा तुम सिलेबस रे ना सो देयर विल नॉट कम एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एलर्जी क्लियर. So for today, thank you.